14th June 2020 was the day millions of hearts broke across our country when we found that a hard-working dreamer who wanted to make it big in the Indian film industry succumbed to the negative thoughts in his head. Sushant took his life. Why? I guess we will never know that. But many of us think that they do know the reason behind his depression. Some are saying that it was loneliness, some are saying it was problems in his love life. Most people, though, are blaming the lack of work and the seclusion, the boycott he faced in Bollywood for being an outsider. We are seeing massive hate online towards the big names of Bollywood like Karan Johar, Alia Bhatt, Salman Khan. नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। जिन लोगों ने आज तक सुशांत की एक मूवी भी थिएटर में जाके नहीं देखी होगी, वो भी उसके नाम पे हेट फैला रहे हैं। Guys, what was going inside Sushant's mind and heart, वो उनके साथ ही चला गया इस दुनिया से। We may never be able to know his pain and tell why he did what he did. And it's pretty disgraceful to spread hate in the name of someone who isn't here to tell his story. Of course nepotism है बॉलीवुड में, and वो रहेगा। पहले भी था, आज भी है, 50 साल बाद भी रहेगा। We can sign as many petitions we can. It won't change a thing. Just imagine if you have been a big producer in Bollywood and your child wanted to be an actor. What would you do? ये बोलते हो उसको कि नहीं बेटा तेरे लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो छोटे शहर से आए टैलेंटेड आउटसाइडर को फिल्म दूंगा। नो, you'd never say this. You do everything in your power to launch your kid again and again and again, जब तक वो सुपरस्टार ना बन जाए। शाहरुख खान वॉज एन आउटसाइडर, ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, बहुत मेहनत की उन्होंने। तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी जिसने खुद वो स्ट्रगलिंग लाइफ देखी है, क्या वो भी अपने बच्चों की जगह किसी आउटसाइडर को प्रेफरेंस देगा? नो, इवन ही वोंट डू इट। Suppose there was an alternate reality, and I really hope that there is such reality somewhere in this multiverse, जहाँ सुशांत सिंह राजपूत became a massive superstar. He became the biggest name in the industry. अगर इस सिचुएशन में फ्यूचर में सुशांत का बेटा या बेटी उससे आके बोलते कि मुझे एक्टर बनना है, तो क्या वो उनके लिए नहीं करता जो उससे होता? Of course he would do it. This is our society and this is how it works. हर जगह है nepotism and favoritism. Be it cricket, be it politics, or be it in your own job. तुम्हारी कंपनी में नहीं होता फेवरेटिज्म? वो छोड़ो यार, हमें जब कोई रिश्तेदार बोलता है कि जॉब लगवा दो, हम नहीं करते उसकी हेल्प। किसी तरह भी करके जहां मौका मिले करते हैं ना अपने बंदों को फिट करने की कोशिश। सो दिस विल हैपन एंड इट विल नेवर गो अवे। एवरीवन वांट्स टू यूज देयर पावर टू हेल्प द पीपल अराउंड देम, पीपल दे लाइक। सो वी शुड स्टॉप बैंगिंग आवर हेड्स अबाउट इट एंड डू व्हाट वी कैन। सब कह रहे हैं बॉलीवुड में टैलेंट की कदर नहीं है, हमें है टैलेंट की कदर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, the movie in which Karan Johar proved that he is indeed the flag bearer of nepotism in Bollywood. That movie did a business of 110 crores. A mediocre movie which had all the star kid newcomers in the lead still managed to do big box office numbers. पिछले साल Student of the Year 2 आई, an even worse movie than the first one. Box office of almost 96 crores. कौन देखने जाता है ये मूवीज? सिर्फ बॉलीवुड वाले? नहीं, हम लोग जाते हैं। हम लोग बनाते हैं मीडियोक्रिटी को स्टार। Let's look at some box office numbers of each year from 2015 to 2019. 2015, a poor senseless movie like Dilwale made 408 crores at the box office. But a phenomenal movie like Masan starring a talented newcomer could only make 6 crores. 2016, Salman's boring and repetitive formula pe based Sultan made 631 crores worldwide. A pathetic movie like Houseful 3 made almost 200 crores. But a far more superior movie like Raman Raghav 2 could only make 7 crores. 2017, another senseless movie from Salman, Tiger Zinda Hai, makes 570 crores worldwide. A boring mess like Tube Light makes 211 crores. The mediocre Golmaal again makes 311 crores. But an amazing movie like Trapped, starring an outsider Rajkumar Rao, only makes 3 crores. 2018, Thugs of Hindostan, 335 crores. Star kid Tiger Shroff's Baghi 2, 254 crores. A despicable Race 3, 303 crores. But a masterpiece like Tumbad, जिसकी आप हर कोई तारीफ करता है, at that time could only make 13 crores. 2019, last year a chaotic mess like Saho made 433 crores. And again भाई की awful movies like Bharat and Dabangg 3 made 325 and 230 crores respectively. An unfunny joke of a movie like Houseful 4 made 280 crores. लास्ट ईयर ही सोन चिड़िया, सुशांत लास्ट मूवी ऑन द बिग स्क्रीन। पहले तो उसे स्क्रीन्स नहीं मिली, एंड जितनी मिली उसमें भी हम लोग उसे देखने नहीं गए।
Not just Sushant, that movie had Manoj Bajpayee, Ranveer Shore, Bhumi Padnekar. एक हफ्ते भी नहीं रही वो मूवी थिएटर्स में. Box office of 7 crores only. A good, brilliantly made movie. Flopped. Now we should ask ourselves, कौन इन मीडियोकर मूवीज को इतना सक्सेसफुल बनाता है? एंड कौन असल में डिजर्विंग बेहतरीन सिनेमा को फ्लॉप करता है? करण जौहर? नो, इट्स अस. क्योंकि हमें टैलेंट नहीं देखना, अच्छा सिनेमा नहीं देखना, हमें बस स्टार्स को देखना है, स्टार किड्स को देखना है थिएटर्स में जाके. Why would Bollywood give a damn about talent if we the audience don't do it? You can blame it on movie marketing or promotions, but in the end हम ही कमा के देते हैं इन मूवीज को करोड़ों रुपए. क्यों कोई प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाएगा सुशांत सिंह के एक्टिंग टैलेंट पे, जब हम सिर्फ शर्टलेस टाइगर श्रॉफ के बेतुके एक्शन को देखने जाएंगे थिएटर में? Actors like Manoj Bajpayee, who prove themselves in every movie they do, Nawazuddin, Pankaj Tripathi, K.K. Menon, time and again keep showcasing their caliber. उनको कितना प्यार देते हैं हम? Manoj Bajpayee has 1.2 million followers on Instagram. You know how many followers Varun Dhawan has? 29 million. Nawaz, probably the best actor working in the country today. Only 2.6 million followers on Instagram. Tiger Shroff, 23 million followers. Even the super successful self-made Ayushmann Khurrana has far less followers than these star kids. कौन है ये 25-30 मिलियन लोग जो इन्हें फॉलो करते हैं? Are these all Bollywood people? No, हम हैं. We are the ones जो इन स्टार किड्स को अपने सर पर बिठाते हैं and then we say Bollywood doesn't value talent. जो हमारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उनके फॉलोअर्स तो टिकटॉक वालों से भी कम है यार. टैलेंट की कदर है हमें. आई एम नॉट सेइंग स्टॉप फॉलोइंग स्टार किड्स. दो, इनको भी प्यार दो. स्प्रेडिंग लव इज नेवर अ बैड थिंग. बट गिव मोर लव टू दीज सेल्फ मेड आर्टिस्ट्स हु डोंट हैव अ स्टार स्टडीड बॉलीवुड लॉबी बैकिंग देम. लेट्स ओपन आवर आईज एंड सी व्हाट इज आवर रोल इन ऑल दिस. हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. वी सपोर्ट मीडियोक्रिटी, वी सपोर्ट बैड कंटेंट, we support talentless star kids. A veteran actor like Sanjay Mishra, who has worked hard his entire life, releases a beautiful movie like Kamyab, and nobody goes to see it. Movie makes a meager 50 lakhs. Just 50 lakhs. And भाई हमारे एक बार चश्मा पीछे कॉलर में लटका देते हैं, पब्लिक पागल हो जाती है, एंड फिल्म को 300 करोड़ बना के दे देती है. It's okay if you like such content, it's perfectly fine. Go and watch it. If you like item songs, senseless action, guys with six packs who can't act, it's perfectly fine. Go and watch it. Support it. But also support the real talent. Also support the self-made hard-working people. And if you can't, then you have no right to blame anyone else. Please note, I'm not saying boycott Karan Johar or Yashraj movies or Mahesh Bhatt. I'm saying please boycott bad content. Nepotism से भी कभी-कभी talent आता है. Look at Ranbir Kapoor. Look at Alia Bhatt. Of course they had it easy. But they have talent and they deserve to be where they are. नेपोटिज्म से ये लोग ला सकते हैं अपने बच्चों को इंडस्ट्री में, बट उनको टिकाना तो हमारा काम है ना. एंड टिकेगा वही जो डिजर्विंग होगा. टैलेंटलेस बंदे आते हैं नेपोटिज्म से तो देर सवेर उनका पैकअप हो ही जाता है. यशराज चोपड़ा सन, उदय चोपड़ा, फेल्ड. इमरान खान, फरदीन खान, जायद खान, फेल्ड. द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ आवर कंट्री, अमिताभ बच्चन, हिज ओन सन अभिषेक, फेल्ड. People like these will fail if they don't have it in them. How many more chances will Arjun Kapoor get? But we have to make sure that we call Bollywood on its bullshit. We have to make sure कि talentless लोगों का पैकअप जल्दी हो and जो talented artists हैं उनको कामयाबी जल्दी मिले. And this will only happen if we boycott bad content. Let them have their paid awards. Let them live in their imaginary bubbles. Please realize that the real power belongs to us. We should support good content, support good artists, support people who know the art of filmmaking and are working to raise the level of Indian cinema. Let's promise ourselves कि अब से कभी एक छोटे एक्टर की अच्छी मूवी आएगी थिएटर में तो हम देखने जाएंगे उसको, सपोर्ट करेंगे उसे. And please go and show some love to the self-made real talents. People like Nawaz, Manoj, Rajkumar Rao, Pankaj Tripathi, Vicky Kaushal, K.K. Menon, Taapsee, Kangana, and so many more deserving people. Especially do it for the younger artists who are more vulnerable. Not just actors, do this for the talented filmmakers too. Go ahead and tell them that they are important. Tell them their work is respected and it will always be cherished. Tell them that they are loved. Maybe if we had done this for Sushant, he would have been here with us today. Boycott mediocrity. Stop pampering people who don't deserve it. Make them earn your love with their work. Support good content.
support good cinema, support talented people. That's the only way we should respect his legacy and keep his fire burning.